Okay, so we were on pipettes, right? So if you see these pipettes, this one has a 1 mark over here, and this one has a 1 mark over here. Okay, and here the capacity of a volume has been written. So it means from these pipettes you can able to only record only measure a one specific volume, not the range of a volume as we were measuring the range of a volume from the burette. But the only thing is that it is also used to for a accurate volume measurements. Yes. Sorry. यहाँ पे unit, yeah, the unit is written 25 centimeter cube. That is the mark till where when you fill the pipette till there, then that it means that is that volume. Okay. तो accurate volume measurements के लिए होता है ये only a specific volume can be recorded or measured. ठीक है, आप एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ही मेजर कर सकते हैं, उससे ज्यादा ये मेजर नहीं कर सकते। और किस तरह मेजर करते हैं इसमें वॉल्यूम, आप इसको फिल कैसे करेंगे? सॉरी, पिपेट फिलर। It can be filled using pipette filler or safety bulb। एग्जामिनर रीजनिंग पूछता है कि क्यों पिपेट फिलर से या सेफ्टी बल्ब से हम इसको फिल कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द रीजन? टू अवॉइड एंटरिंग द लिक्विड इन माउथ। So I'm writing the reason over here, to avoid entering chemical in mouth। This is the safety bulb। And this is the safe pipette filler। और इन दोनों का पर्पस जो है 1 मार्क के लिए एग्जामिनर ये रीजन पूछ सकता है। Yes. No, not 110 का होता है, 1 और 2 का भी होता है, and some there are some pipettes which are graduated as well, which means that they have a whole scale. But in Cambridge, we only use the ones with specific volume, not the whole range of a volume. 1 centimeter cube, 2 centimeter cube, 5 centimeter cube, 10 centimeter cube, 25 centimeter cube। पिपेट्स इन सब के और समटाइम्स शायद 50 वाले भी आते हैं, 100 वाले तो नहीं होते, 25 तक के होते हैं। बट यूजुअली इन कैम्ब्रिज वी यूज ओनली 25 सेंटीमीटर क्यूब, बट द वन व्हिच इज नॉट ग्रेजुएटेड। केमिकल इन माउथ, इन माउथ।
Yes. Good. 1 minute. ओके, अगर आप में से किसी को यहाँ तक कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। नेक्स्ट थिंग इज अ वॉल्यूम ऑफ gases. How we record the volume of gases? So there are two ways. One is a gas syringe and the other one is using a measuring cylinder. ठीक है, measuring cylinder से गैस का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया जाता है। एंड गैस सिरिंज। अच्छा, मेजरिंग सिलेंडर से जो गैस का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया जाता है दैट इज आल्सो कॉल्ड वाटर डिस्प्लेसमेंट कलेक्शन ऑफ गैसेस। अगर आप इसमें देखें यहाँ पे तो होता क्या है कि जब गैस कलेक्शन शुरू होती है तो गैस जब यहाँ से यहाँ मूव होती है तो वो वाटर को डिस्प्लेस करती है, वाटर नीचे ट्रफ में बैठता है, जाता है और यहाँ पे जो है स्पेस क्रिएट होती जाती है और जो यहाँ पे हम वॉल्यूम रिकॉर्ड करते हैं वो गैस का वॉल्यूम होता है। ठीक है। अच्छा, देखें जब रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, गैस फॉर्म हुई, उस गैस के फॉर्म होने की वजह से वो गैस यहाँ पे मूव होगी। जैसे ही वो यहाँ पे मूव होती है तो उसकी वजह से वाटर को डिस्प्लेस करती है, बबल आउट होके यहाँ पे पहुंचेगी। ठीक है, जो जैसी बबल आउट यहाँ होके यहाँ पे पहुंचेगी ये स्पेस क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गैस आ जाएगी और वाटर जो नीचे मूव होके ट्रफ में आ जाएगा। ठीक है जी, जोर से बोलो। मेजरिंग सिलेंडर को वाटर से पूरा फिल करके यूं इन्वर्ट किया जाता है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है? गैस सिरिंज वाला। अच्छा, इसमें जो यूजुअली गैसेस कलेक्ट की जाती हैं उनकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, गैसेस विच आर वाटर इनसॉल्युबल। ऑब्वियसली अगर वाटर सॉल्युबल गैस है
तो वो तो वाटर में ही डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो द गैसेस विच आर वाटर insoluble collected this way, ठीक है। जो वाटर insoluble गैसेस हैं उनको इस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। अच्छा, इसमें एक रीजनिंग पूछता है एग्जामिनर। जब भी ये डायग्राम देता है तो मैंने देखा है कि मोस्टली एग्जामिनर एक रीजनिंग पूछता है, और वो ये पूछता है कि जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो समटाइम्स शायद पेपर 2 में भी आ जाती है, मगर अभी पेपर 4 में। तो why we remove the tube from the solution from this truck as soon as the reaction completed? फौरन से क्यों रिमूव किया जाता है? जी, तो वाटर सक बैक ना हो जाए, क्योंकि अभी तो देखें कंटिन्यूअसली वाटर निकल रहा है उससे, तो जब वो वाटर निकल रहा है तो उसकी वजह से जो है वो वो नहीं है, वो गैस निकल रही है तो वो नहीं होगा, मगर जैसी सारी गैस खत्म हो जाएगी तो वहां वैक्यूम क्रिएट होगा, और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से वाटर पूरा सक बैक होगा, ठीक है। तो ये मैं रीजनिंग यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। To avoid water yes, I will share it. To avoid water suck back, the delivery tube is removed quickly from the water truck. ये बात यहाँ तक क्लियर है? गुड। देखें, it's the simple thing. Let me explain it again. One minute. Yeah. अच्छा, usually by this way we may record the volume of those gases. ये properly shown or okay, मैं ये change कर दूँ। देखें, the question you were asking, for example, initially what is present in this space? Air. So when the gas is formed and bubble out over here, so when gas enters over here, what happens to that air? Yeah, that air moves to the delivery tube and displaces this. So whatever the volume of
collected over here initially, that volume is of which gas? Air or carbon dioxide? Air. But the thing is that whatever the volume of air collected over here, exactly the same volume of carbon dioxide is present in this. So that's why it doesn't make any sense if the air is being collected, it doesn't matter in the recording or in the measurement of the volume. The volume is going to be exactly the same. Is this clear? Yes, so with the gas syringe, we usually collect or may record those gases which are water soluble. So obviously, if these are water soluble, if we use this method for them, those gases are going to dissolve in water. Okay, so gases which are water soluble measured their volume this way. Okay, so these gases normally includes oxygen, chlorine, hydrogen chloride gas, for example, ammonia gas, if it is being liberated, and carbon dioxide can also be collected by this way, but carbon dioxide, remember, is very slightly soluble in water, so carbon dioxide sometimes collected by this way as well. But beside carbon dioxide, the other gases like methane, hydrogen, ethane. So these are the gases which are completely water insoluble. So these are going to be collected by this way. Is this understandable? Methane, CH4 is methane, and C2H6 is ethane. Okay. Beside this, there are two other ways of collecting the gas, but at that time, we do not, there is no need to record the volume and we just have to collect the gas. So there are two ways of gas collection. Here we are recording the volume. So gas can also be collected by these two ways. But beside these two ways, collection of a gas can be, done by this way as well, that there is a delivery tube and we have a gas jar present. So see the displacement of the delivery tube, it is in the downward displacement because it is allowing the gas to move towards downward. The other way is that delivery tube is placed like this, and here it is the upward displacement of the delivery tube. Okay, so what is the mass of air if I ask you? What is the relative molecular mass of air? Okay, what is the composition of air? Sorry, nitrogen. How much? Around 78%. And what is the mass of nitrogen? Nitrogen's atomic mass is 14. So the molecular mass of nitrogen is 28. Beside nitrogen, the next major component of our air is oxygen, which is around 21%, right? So, and the mass of oxygen is 32. Atom is 16, but oxygen is a diatomic gas, so its mass is 32, right? So it means that roughly the average relative molecular mass of air is going to be around 30, right? So if the gas which you are going to collect is heavier than air, then those gases are collected downward delivery. Gases
heavier than air. So let me write the MR of air. That the MR of air is, it's an average MR of air. It's 30. So gases which are heavier than air are collected by downward displacement of a delivery tube, and gases lighter than air are collected by upward displacement or upward delivery of the gas tube, of the delivery tube. Is this clear to all of you? Sorry? No, the gases which have a MR higher than 30 are going to be collected by this way, by keeping the downward displacement of the delivery. The average air mass of air is 30, right? So if the gases which are heavier than 30, which has a MR heavier than 30, we are going to collect them by keeping the downward displacement of the delivery. And the one which has a lighter than air, which means which has a mass lesser than 30, we are going to collect those gases by this way, by keeping the upward displacement of a delivery. Is this understandable to all of you? Yes, very good, Ahmed. Sorry. O2, chlorine, oxygen, chlorine, HCl, ammonia, and carbon dioxide. These can be collected by a gas syringe. Okay, there are few separation techniques. I'm just going to write down their names. Like, there is a chromatography, fractional distillation, simple distillation, filtration, crystallization. I think you guys must know. No, you have to identify, for example, they have given you a case and you have to figure out whether you have to do the crystallization or whether you have to do the filtration or chromatography. क्या तो क्वेश्चन आ जाता है यूजुअली फर्स्ट क्वेश्चन कभी कभार क्रोमेटोग्राफी का आता है हमने कल वाले पेपर में शायद पूछा था ना सी ये आपके पास क्वेश्चन था क्रोमेटोग्राफी से ठीक है तो ओके तो देखो अगर वो क्रोमेटोग्राफी का आ रहा है सॉल्ट प्रिपरेशन का भी आ सकता है वो तो बहुत ही आसान फिर तो उसमें कोई मसला ही नहीं है हाँ बट अगर उसके अलावा डिफरेंट चीजें आती हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है अच्छा हाँ अच्छा हुआ ये बात याद कराई तो यहाँ पे एक चीज जो हमने शुरू में नोट डाउन की थी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट जो आपने पेपर 2 में सारी पढ़ी थी कि सॉल्युबल सॉल्ट्स को किस किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट को किस किस और कौन से इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए प्रेसिपिटेशन करते हैं एक ही मेथड है बट फॉर सॉल्युबल सॉल्ट्स वी हैव अ 3 मेथड्स राइट one is a titration and the second one is a acid with a insoluble solid और वो insoluble solid मेटल भी हो सकता है मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है मेटल कार्बोनेट भी हो सकता है तो वो भी उसमें आ सकता है तो अगर ये वाला आ रहा है तो ये तो बहुत ही आसान है इसमें तो आपको पूरा प्रोसीजर लिखना है और आखिर में बताना है कि आप उसको कंक्लूड कैसे करेंगे मगर अगर इसके अलावा कोई और आ रहे हैं तो वो थोड़े से मुश्किल हो सकते सॉरी तो इससे हटके अगर कोई और आएगा ना तो अभी आप क्वेश्चन देखिएगा उसमें उसने क्वेश्चन में ही सब कुछ मेंशन किया है वो 6 मार्क्स के लिए कि आपने क्या क्या करना है वो बोलता है एप्रेंटिसेस वो बोलता है कौन कौन सी मेजरमेंट्स किस चीज को कांस्टेंट रखोगे क्या करोगे उसने सारे कीवर्ड्स बताए हुए हैं क्वेश्चन में कि व्हाट यू हैव टू डू तो अगर आप उन्हीं पे फोकस करके दोबारा उसको रीड करेंगे तो आपको खुद ही पॉइंट्स बनते चले जाएंगे अच्छा जी यहाँ तक क्लियर है सबको कोई कंफ्यूजन ओके नाउ
separation techniques. Filtration. कब करेंगे filtration? And I think you must know these terms. What is filtrate? Residue. Just the solid thing you obtain is a residue, and the liquid that you obtain after separation is a filtrate. Okay. When we do the filtration, what is the purpose of a filtration? To obtain a solid, an insoluble solid. And how you will figure out that it is an insoluble solid? In the container, you are observing that there is a solid and it doesn't get dissolved. So for that, you will do the filtration. Is this clear? Okay. Crystallization. Two. किस लिए करते हैं crystallization? To obtain what? G. Oliver, किस लिए करते हैं crystallization? Crystals. और crystals किसके होते हैं? जो soluble solid होता है. ठीक है, जब भी आपको soluble solid obtain करना है तो आप क्या करते हैं? Crystallization करते हैं. To obtain soluble solid from solution. तो एक बात बताइए, soluble solid के लिए तो हम evaporation भी कर सकते हैं ना, तो why crystallization, why not evaporation? Evaporation, आप evaporate कर दें solvent को. Crystallization और evaporation में what is the difference between crystallization and evaporation? What does crystal mean? Crystal is a solid thing, right? No, the difference is now understood. When we do the heating, अगर solid नहीं होगा तो फिर हम crystallization या evaporation नहीं करेंगे. Heating over evaporation or crystallization, ये दो चीजें बोली. तो difference is when we heat it, that heating can be done by in two ways. You can heat and continue to heat until all the solvent evaporates, and as a result you will get the solid crystals. Okay, and the other way is that you heat the solution and you will see that after heating, when some of the solvent or half of the solvent has been evaporated, the crystals start forming. Then what you do? You stop heating, you allow the container to cool, and as a cooling, during the cooling, more crystals are formed, because as the temperature gets lower, the solubility decreases and more of the salt turns into crystals. And then we separate them by filtration, right? So, but the thing is, you need to understand when to do crystallization and when to do heating till evaporation. For example, now you have to obtain sodium chloride solid. What you will do? Heating till evaporation. But if you do the crystallization, they can consider it. But for example, now you have to obtain copper sulfate dot 5H2O solid. So it is a hydrated copper sulfate. So if you do heating till evaporation, you are not going to obtain hydrated copper sulfate. You are going to obtain anhydrous copper sulfate, which is white solid. So if you have to obtain the blue crystals, then for this,
you have to do crystallization. But if you have to obtain from the aqueous solution anhydrous copper sulfate with no water of crystallization, then you will get heating till evaporation. Is this understandable to all of you? Is it clear? So, in this case, you are going to get white solid. And here you are going to get blue crystals. So see, it is changing, the copper sulfate is changing its color due to the water. So it means it is used to test the water. If I use anhydrous copper sulfate, it's white in color, and with interaction with any substance, it turns blue. So it means that the substance, the sample has a water in it. So adding anhydrous copper sulfate, which is white solid, you will observe अच्छा वो मैंने स्वैप कर दिया, सॉरी। यहाँ पे ब्लू क्रिस्टल्स होंगे क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन से हमने ऑब्टेन किया ना 5, और ये व्हाइट सॉलिड होगा जहाँ पे उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। थैंक यू। ओके, ये आपको याद करना है कि जब उसके साथ वाटर है तो उसका कलर ब्लू है, और जब वो वाटर नहीं है, जस्ट है, देन इट्स अ व्हाइट। तो इसीलिए अगर हम एनहाइड्रस डालेंगे, दिस वन इज एनहाइड्रस, ओके, और वो व्हाइट कलर का है और उसका कलर ब्लू हो रहा है, ठीक है, ब्लू कलर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे वाटर है। यही सवाल है। ओके, वाटर। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे अभी वाटर के टेस्ट की बात हो रही है तो दूसरा टेस्ट भी कर लें। वाटर को और किससे टेस्ट किया जाता है? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर से, या कोबाल्ट क्लोराइड से उसका क्या कलर चेंज होता है? ब्लू से पिंक। वेरी गुड, ठीक है। तो कोबाल्ट क्लोराइड इटसेल्फ भी यूज किया जा सकता है, और कोबाल्ट क्लोराइड पेपर भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इधर आपको कलर चेंज क्या मिलेगा? ब्लू टू पिंक। और अगर ब्लू टू पिंक चेंज मिल रहा है तो इट मींस वाटर इज प्रेजेंट। और यहाँ पे भी क्या है, इसका मतलब क्या है? किसका? कॉपर में वाटर के साथ ब्लू होता है, कोबाल्ट क्लोराइड में विदाउट वाटर ब्लू होता है और वाटर के साथ पिंक हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखें, ये ब्लू है ना, तो इट मींस इट्स अ कोबाल्ट क्लोराइड सॉलिड ओनली, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड, एंड व्हेन इट टर्न्स इनटू पिंक इट मींस इट्स अ कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6H2O या डॉट 5H2O वाटर के साथ हो जाए। सही है। ठीक है, I'll send you the record. Sure. You're welcome. ये यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन?
तो एवापोरेशन की भी बात हो गई, क्रिस्टलाइजेशन की भी बात हो गई, फिल्ट्रेशन की भी बात हो गई, और वाटर के टेस्ट की बात हो गई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के टेस्ट याद है? एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट किसके लिए होता है? इट्स इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स यूज्ड टू टेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और पर्पल टू कलरलेस होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट कर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेस्ट करने के लिए एक्वस पोटेशियम आयोडाइड यूज करेंगे, और वो कलरलेस टू ब्राउन होगा, और वो खुद क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिडॉक्स में मेंशन है, ठीक है, ये पेपर में आता है। हाँ, ये पेपर इसमें भी आता है, कलरलेस टू ब्राउन, नॉट ब्राउन टू कलर। टू टेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को समझनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेस्ट करने के लिए डाल रहे हैं, कलर चेंज क्या आ रहा है? कलरलेस टू ब्राउन। बट अगर उन्होंने बोला कि जो ऑक्सीडाइजिंग, फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है, और KMnO4 में एक्वस पोटेशियम आयोडाइड डाला, देन व्हाट विल बी द कलर चेंज? पर्पल टू ब्राउन, क्योंकि देखिए KMnO4 पर्पल टू कलरलेस हो रहा है, तो उसका पर्पल कलर खत्म हो गया, और आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला है, ये इनिशियली कलरलेस था, बट ये क्या हो रहा है? ब्राउन हो रहा है। तो पर्पल टू ब्राउन, इस बात का भी ख्याल रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो ये रिड्यूस करेगा। अब लेट सपोज, लेट मी, इफ देयर इज Fe3 पॉजिटिव आइंस, इस बात को समझिएगा, और इसमें आपने ये आयोडाइड डाला, आपके पास Fe2 पॉजिटिव बना और आयोडीन बना, तो इनिशियल कलर क्या होगा? ब्राउन। और सॉरी, एंड कलर क्या होगा? ब्राउन, क्योंकि आयोडीन फॉर्म हुआ है। इनिशियल कलर क्या होगा? आयरन 3 पॉजिटिव के एक्वस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? येलो, येलो ब्राउन, येलो ब्राउन सा होता है। तो येलो ब्राउन टू ब्राउन, ठीक है। और मैं यहाँ पे इनके कलर लिख देता हूँ, ये बात आपको याद होनी चाहिए। येलो ब्राउन, रेड ब्राउन, वो प्रेसिपिटेट्स रेड ब्राउन बनते हैं जब वो प्रेसिपिटेट आउट होता है, तो वो जब सोल्यूशन में होता है तो डाइल्यूटेड होने की वजह से कलर बहुत लाइट होता है। इसी तरह Fe2 पॉजिटिव के प्रेसिपिटेट्स क्या बनते हैं? ग्रीन। बट अगर वो एक्वस सोल्यूशन में होता है तो इसका कलर होता है पेल ग्रीन। काट सकते, काट सकते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेट्स ग्रीन है, प्रेसिपिटेट सॉलिड थिंग है, ठीक है। और यहाँ पे वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने की वजह से वो ग्रीन कलर बहुत लाइट हो रहा है, तो इसलिए हम पेल ग्रीन बोलते हैं। अच्छा, इसी तरह आपको एक और बात याद रखनी है, अगर किसी भी सॉल्यूशन में एक्वस कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा? ब्लू सॉल्यूशन होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? है किसका? नहीं, क्यों? ये तो तुम बताओ, पेपर 2 देख के आ रहे हो और अभी भी ये बात पूछ रहे हो। अगर I माइनस है तो उसका मतलब है वो कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, ये बात क्लियर, ठीक है। अब I माइनस, I किस कौन सा एलिमेंट है? आयोडीन। आयोडीन किस ग्रुप में होता है? ग्रुप 7 में। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड कलर होते हैं। हाँ, अगर यही आई किसी, फॉर एग्जांपल आयरन आयोडाइड होता, टाइटेनियम आयोडाइड होता, कॉपर आयोडाइड होता, तो इट इज गोइंग टू बी कलर्ड। बट अगर यही सोडियम आयोडाइड होगा, कैल्शियम आयोडाइड होगा, एल्यूमिनियम आयोडाइड होगा, बेरियम आयोडाइड होगा, पोटेशियम आयोडाइड होगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 से आयो हेलोजन बॉन्ड होगा, तो उस कंपाउंड का कलर नहीं होगा, वो व्हाइट होगा, वो कलरलेस होगा। जिंक के साथ भी कलरलेस होगा, ठीक है ना? है
अच्छा, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर आप सॉलिड है तो व्हाइट लिखते हैं, और अगर वो सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो आप कलरलेस सोल्यूशन पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ओके, देन वी हैव सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन कब की जाती है? टू ऑब्टेन solvent from soluble solid। फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर और वाटर डिसॉल्व किया हुआ है, आपको शुगर ऑब्टेन करनी है तो क्या करेंगे? एवापोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन। शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन में से आपको सॉल्ट ऑब्टेन करना है, क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। बट अगर आपको सॉल्ट सॉल्यूशन में से वाटर ऑब्टेन करना है, सिंपल डिस्टिलेशन। आपको सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन में से वाटर ऑब्टेन करना है, सिंपल। ठीक है, टू ऑब्टेन a liquid from mixtures of liquid और solutions of liquids। यहाँ पे दो या तीन लिक्विड्स मिक्स हुए हैं और उनमें से आपको एक भी एक लिक्विड सेपरेट करना है, तो देन यू विल गो फॉर अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या आ जाएगी? वाटर फ्रॉम सी वाटर, सही है, वाटर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, एंड नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस किस के लिए की जा सकती है? इथेनॉल एंड वाटर, because both are liquid. What else? For crude oil, to separate the fractions of a crude oil, like you have to separate petrol, diesel, right? Naphtha. What else? Hmm? That is the general thing. Now tell me the specific example. Miscible solution, miscible liquid. Okay. Now tell me the another example where we perform the fractional distillation. Liquid air. Because when we cool the air, all the gases turns into liquid. And when we have to separate each of them, we have to do the fractional distillation, not simple distillation. Is this clear? Now next we have chromatography. Okay. To separate solid from a mixture. I'm not going to go in detail in chromatography. After separation, we can easily identify them. So to separate solids from a mixture of solids, usually colored, depends upon solubility of each component in solvent, because in each component, because in solvent each component has a different solubility,
right? So that's why the separation can be done easily from the chromatography. Okay. If colorless sample is used like or such as a mixture of amino acids, we separate, uh, we use locating agent to make the spots of amino acids visible. After the solvent has run the whole height of the chromatography paper, then after drying, we spray a locating agent on the paper. So wherever the amino acid travel, you will get the spots. Here we have a RF value, which is the distance traveled by solute over distance traveled by solvent. Helps to identify the components of mixture. Few things जो आपको इसके लिए ध्यान में रखनी है, that the baseline is always made up by pencil because we are putting the sample in it, so it does not mix with the sample. It does not dissolve in the solvent. If we use the ink instead, ink dissolves in the sample. Ink dissolves in the solvent, so it mixes with the sample. So we are not able to, get the correct results. When we dip the chromatography paper in the solvent, the solvent level must be lower than the baseline. Otherwise, the sample would, dissolve off from the chromatography paper. Because if it's at a higher level, so what happens that the sample dissolves off from the chromatography paper. So there will be no separation on the chromatography paper. And the solvent front is the top distance which is traveled by the solvent. Okay. Now, basically, now let's talk about question number, the last question, which is the designing of the experiment. Sorry? Reagents are simply the chemicals which we are mixing with each other are called reagents. For example, if you have to make a sodium chloride, you are going to use sodium hydroxide and hydrochloric acid. So sodium hydroxide and hydrochloric acids are the reagent. Now, for example, let's say you have to test for a chloride ion. किसी को chloride ion का test याद है? Chloride ion. Dilute nitric acid and then silver nitrate to the sample. तो एक sample है वो unknown है. अगर वो unknown है तो मैं उसे reagent नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है. But the things which I am adding in it, like dilute nitric acid and then silver nitrate. So these two are the reagents that I am using to figure out whether that the unknown sample has either a chloride ion or bromide ion or iodide ion. तो जो चीजें हम known चीजें use करते हैं वो reagents कहलाते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो डिजाइनिंग वाला क्वेश्चन है उसमें यही सारी चीजें अप्लाई होंगी. ठीक है, बट एक्चुअल बात ये कि आपको ये फिगर आउट करना है कि कहाँ पे क्या चीजें अप्लाई करनी है और ये क्या इंफॉर्मेशन. तो एक काम करते हैं,
थोड़ा सा 15 मिनट्स का ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स का। उसके बाद फिर हम एटलीस्ट, पहले तो मैं सोच रहा था पूरा पेपर आप लोगों को करवा दूं, बट आई थिंक कि उस पूरे पेपर करने से अच्छा है कि हम ना 2 क्वेश्चंस जो है ना ये डिजाइनिंग वाले देखें, क्योंकि बाकी चीजें तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो आप लोगों के बाकी मार्क्स तो सिक्योर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत इजी आता है, क्रोमेटोग्राफी से आएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आएगा, सिंपल डिस्टिलेशन से आएगा, 4 to 5 मार्क्स का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन टाइट्रेशन से आएगा। टाइट्रेशन के अलावा रेट ऑफ रिएक्शन से आ सकता है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन की अभी पिछली क्लासेस में किए थे पेपर। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के बाद किससे आ सकता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से आ सकता है। ठीक है, आ गया, कब आया, तो वो तो सारी चीजें पेपर 2 में तो आती हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन किसका है, सॉल्ट एक टेस्ट है। तो यहाँ तक के तो आपके मार्क्स, आई एम वेरी होपफुल कि इसमें आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अच्छा, एक और चीज रह गई जो मुझे डिस्कस करनी है, टेस्ट फॉर कैटाइंस एंड एनाइंस से। अच्छा, जो पहले पूछता था अब नहीं पूछ रहा वो बात, मगर वो पूछ लेता है, पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल उसने बोला है कि एक सैंपल है डब्ल्यू, जी कुछ पूछना है, ओके। डब्ल्यू में 2 कैटाइंस प्रेजेंट है, 2 एनाइंस प्रेजेंट है, लेट्स सपोज वो कहता है कि डब्ल्यू को आपने वाटर में डिसॉल्व किया और सॉल्यूशन बनाया, दैट सॉल्यूशन इज अ कलर्ड, व्हाट यू कैन कंक्लूड। अगर ये बात कह रहा है तो आपका कंक्लूजन क्या होगा, इट कंटेन्स अ ट्रांजिशन मेटल आयन। ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात, उसने कहा कि डब्ल्यू में आपने एसिड डाला। अच्छा, डब्ल्यू क्या है पहले मुझे जरा दोबारा रिकॉल करवाएं। वो तो है, मगर हमने डब्ल्यू के बारे में, 2 कैटाइन्स है 2 एनाइंस है, तो इसका मतलब है इज इट एलिमेंट और अ कंपाउंड, कंपाउंड। अब अगर उसमें एसिड डाला और एफरवेसेंस बने तो वो एफरवेसेंस किसके होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर मैं एक सॉलिड है और उस सॉलिड में एसिड डाल रहा हूँ और एफरवेसेंस बन रहे हैं तो एफरवेसेंस किसके होंगे, नहीं मैंने आपको अभी वो क्या बोला है, देयर इज अ वन सॉलिड, मैंने और कुछ नहीं बताया उस सॉलिड के बारे में, और मैं कह रहा हूँ कि मैं उस सॉलिड पे एसिड डाल रहा हूँ और एफरवेसेंस बन रहे हैं तो एफरवेसेंस किसके होंगे, हाइड्रोजन नहीं हो सकता, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, एसिड प्लस मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर उस सॉलिड की आइडेंटिफिकेशन आपको पता ही नहीं, जिस तरह भी आपको डब्ल्यू पता चल गया ना कंपाउंड है, तो कंपाउंड में तो आइंस है, तो आइंस तो कार्बोनेट आइन वुड बी देयर, that's why on adding acid we are getting the effervescence, the effervescence are of carbon dioxide, which means carbonate ion. But if you are adding, putting a, mixing a solid in an acid, or yeah, putting a acid on a solid and effervescence are formed and you have no other information about that solid, so it means it can be hydrogen or it can be carbon dioxide. So how you will confirm it, right? Acid, so see designing में इस तरह आ सकता है, बाकी अप्रोच क्लियर होगी तो आप इसको अप्लाई कर लेंगे। तो अब आप टेस्ट करके आइडेंटिफाई करेंगे कि इंट्रोड्यूसिंग अ पॉप burning splint gives a pop sound, so it confirms the hydrogen, and if it's a hydrogen then it means that the solid is a metal। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम गैस को किससे पास करेंगे, लाइम वाटर से, और वो लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई है तो इट मींस उस मेटल सॉलिड में क्या है, कार्बोनेट है, एंड इट मींस इट्स अ कंपाउंड, इट्स अ मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो एसिड डालने पे, अगर आपको सॉलिड में एसिड डालने पे गैस फॉर्म हो रही है तो वो सॉलिड क्या हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, मेटल कार्बोनेट भी हो सकता है, जो हम आइडेंटिफाई करेंगे गैस को टेस्ट करने के बाद। बट अगर सॉल्यूशन है और उसमें एसिड डालने पे एफरवेसेंस बन रहे हैं तो सॉल्यूशन तो मेटल का नहीं हो सकता ना, वो मेटल के आयन का हो सकता है। अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है उसमें अगर एफरवेसेंस बन रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही बन रहे हैं, और इसका मतलब है कार्बोनेट आयन। ये बात यहाँ तक क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन, ओके। तो हम जो है हाँ, तो वही तो बताया, ये पर्पल से कलरलेस हो गया और आयोडाइड आयोडीन बना ब्राउन हो गया, तो पर्पल टू ब्राउन। ठीक है, तो सो वी आर हैविंग अ
ब्रेक फॉर 10 minutes और फिर हम उसके बाद जो है 2 या 3 क्वेश्चंस जो है डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी 10 मिनट बाद जो सब बैठे हुए ऑनलाइन होके आ जाइए। Okay, so let's have a look at the designing based questions. It's of 8 marks, but usually I took it from the previous year 2022, ठीक है, और 2023 से ये 6 marks पे ही आ रहा है, ठीक है। तो वो 8 marks से परेशान ना हो, लेने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 6 marks का आएगा। So have a look at this question. I think it's readable to all of you. A student has 3 colorless organic liquids W, X, and Y. One is alkene, and one is an alcohol, and one is carboxylic acid, but the student does not know which liquid is which. Okay. Describe a series of tests to determine which liquid W, X, or Y is the alkene, which is the alcohol, and which is carboxylic acid. Each liquid must be identified by a positive test. So it means you have to use that test, which is going to show a positive observation for that compound. You are provided with separate simple liquids of W, X, and Y. Aqueous potassium magnate, aqueous bromine, calcium carbonate. See? So see, they have given you all the things. So you know that it is for alcohol. It is for alkene. And it is for carboxylic acid, right? The apparatus normally found in the school laboratory. In your answer include a description of the tests, the apparatus needed for the test, how the results of the test are used to W, X, and Y, to identify W, X, and Y, a safety risk that is involved in doing one of the tests, and precautions to avoid risk. Okay. So, yes, can anyone tell me the safety risk? Why? You have to identify that. That is a acid. So acid is a corrosive, so that's why we wear a glove. No. Are can be used when there is some gas which causes irritation in your eyes. In the same way, if there is a gas which has a bad smell or causes respiratory problem, then you can use a gas mask or do that test in the fuming cupboard. Okay. So here, no, if you are going to write Googles, then it is not going to be considered correct. No, because acid है ना. So acid का nose से interaction हो सकता है. Acid directly आपकी skin को damage करता है ना, तो gloves. Sorry. हाँ, तो अल्कोहल क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लेमेबल होते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि अगर मगर देखें इसमें किसी में भी हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ऐसा कोई टेस्ट ऑर्गेनिक तो आपको हीट करना है और हीटिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप ऑर्गेनिक क्योंकि फ्लेमेबल होते हैं तो आप नेकेड फ्लेम यूज नहीं करेंगे, बंसन बर्नर यूज नहीं करेंगे, आप इलेक्ट्रिक हीटर यूज करेंगे उनको हीट करने के लिए। सॉरी, जोर से बोलो। ओपन स्पेसेस क्या, किसने बोला लेबोरेटरी? लेबोरेटरी में ही करेंगे भाई, लैब है किसकी? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट at aqueous. Okay, first what you will do, it's better to write in that way. Divide each liquid W, X, and Y into 3 parts.
Because we don't know which one is a W, which one is a X, and which one is a Y. So what we did, we divided W into 3 parts, we divided X into 3 parts, we divided Y into 3 parts. Why we are dividing into 3? Because we have 3 reagents to test. One is potassium magnate, one is aqueous bromine, and one is calcium carbonate. Okay. 2, 1, or you can say 2. First part of each W, X, and Y at aqueous bromine, right? The one in which its color changes from brown to colorless, contain alkene. So we have identified W, X, and Z. Any one must have the color change. So that one is an alkene. Is this understandable? Okay. Now, to second part of each W, X, and Y at acidified potassium manganate, the one in which color change is purple to colorless, contains alcohol. Now, to the third part of each W, X, and Y at calcium carbonate, the one in which bubbles are formed or effervescence are formed, contains carboxylic acid. Hmm? What we are adding? Calcium carbonate, and the acid is there. So carbon dioxide. Okay. So now the safety precaution. Uh, acid is corrosive. Hence, wear gloves. And here we are not undergoing any heating. So you can write that as well, that these are the organic compounds which are flammable. So keep away from the naked flames. So that can be also written over here. Yes, but the thing is that a description for the test they have mentioned you. Obviously, that is understood when you are performing the experiment you done with the two. So you must know that the one
in which we are not getting any observation, that must have a carboxylic acid. But here they have asked you to write the test. So when you are stating, so you have to write the whole thing. So that's what you said. Usually we suggest students to do in AS level in the practicals. देखिए भाई प्रैक्टिकल कर रहा है ना, उसने स्टेट करना है, तो प्रैक्टिकल में उसने तीनों को किया। आप जब पता है तीन है, दो आइडेंटिफाई हो गए कि W में ये था, X में ये था, तो Y में जो तीसरा बचा ऑब्वियसली वो Y में होगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है। हम बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं इसके प्रैक्टिकल में, डोंट डू इट, बट यू हैव टू स्टेट दैट। एग्जामिनर के पास तो कॉपी जाएगी ना, तो आपको वो पूरी चीज स्टेट तो करनी है कि ये करने पे ये शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। सॉरी, कौन सा मोल्स वाला? अच्छा पिछले साल में आप देखें तो इतना भी मोल्स आया ही नहीं। तो देखें, हाँ तो अगर टाइट्रेशन वाला आया तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मुश्किल है क्योंकि अब हर दफा थोड़ी आ रहा है टाइट्रेशन। ताकि देखो 2023 के पेपर्स, तो यही तो मैं बता रहा था कि टाइट्रेशन की तरह का रेट ऑफ रिएक्शन भी आ सकता है और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी आ सकता है। फिर एंडो एक्सो तो चलो आ चुका है, तो फिर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी बच रहा है और मोल्स और टाइट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन का आता है कि अभी मैंने वी डन इन द लास्ट वन क्लास, कौन सी क्लास में किया था? अच्छा देखिए ये था रेट ऑफ रिएक्शन टाइट्रेशन वाली जगह पर, कि आपको डिसअपियर होने के बाद वापस अपियर होने का टाइम नोट करते हैं और ऊपर से देख रहे होते हैं। तो इसी तरह उसने ये सारे टाइम्स नोट करवाए, टेम्परेचर्स नोट करवाए, ग्राफ बनवाया और फिर ये। तो अगर टाइट्रेशन का सवाल आया तो उसमें कैलकुलेशन आने के चांसेस हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं आएंगी। बट अगर आप पिछले टाइट्रेशन के क्वेश्चन भी देखें तो उनमें मोल्स की कोई इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस थी नहीं। ये देखें, ये कैलकुलेट करवाया आपसे, ये रिकॉर्ड करवाया, ये रिकॉर्ड कराया, सिर्फ ये वॉल्यूम, और ये देखें कितने सवाल हैं कैलकुलेशन के, तीन पार्ट्स। इसमें सबसे पहले पार्ट में वो हमेशा जो एवरेज वॉल्यूम है उससे मोल्स निकलवाता है, फिर दूसरे के मोल्स निकालने को कहता है, वो आप दोनों का रेशियो लेके निकालते हैं, फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बोलता है, तो वो देखते हैं कि हाँ, तो यूजुअली इससे ज्यादा नहीं आ रहा, तो आप अपने एंड से इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और मैं एक मिनट, मुझे एक और भी क्वेश्चन देखूंगा। अब ये देख लें, अक्टूबर नवंबर 23 पेपर 4-1 का क्वेश्चन है डिजाइनिंग का। ये देखिए, ammonium sulfate is a salt used in fertilizers. Ammonium sulfate is prepared by neutralizing dilute sulfuric acid and aqueous ammonia. See, both are aqueous. So which method has been used? Titration.
Plan an experiment to prepare pure dry crystals of ammonium sulfate. So it means you have to write the whole procedure of a titration, how you will do it. Your plan should include use of common laboratory apparatuses, dilute sulfuric acid, aqueous ammonia, methyl orange indicator. So what is the color of methyl orange in acid and in base? And in base it's yellow. No other chemicals should be used. Your plan should include the apparatus needed, the method to use. So, for example, let's start. It's a titration. Conical flask, burette, pipette. These three things are needed. So pipette out 25 centimeter cube. Okay, here it's up to you. You can use either aqueous ammonia or sulfuric acid. Pipette out 25 centimeter cube of aqueous ammonia, or either you can use sulfuric acid as well to the conical flask. If you are using aqueous ammonia over here, then you are going to fill the burette with the sulfuric acid. Otherwise, do the opposite. Pipette out 25 centimeter cube sulfuric acid to the conical flask and fill the burette with the aqueous ammonia. I am saying that we have got two reagents and we have to do the titration. So that's what you have to identify, that why titration, because both are aqueous. And the salt is also a soluble salt. That's why titration has been done. So for a titration, one thing we take in the conical flask and the other one is the burette. So it doesn't matter whether you are taking ammonia in the flask and the sulfuric acid in the beaker or opposite of it. Okay. So fill the burette. Then the precipitation. But when we mix both the reagents, the insoluble salt precipitate out. And then filter the precipitates, wash it with the distilled water, and then dry it in oven. Titration, precipitation, and the other one is a acid with the insoluble solid. But that is that insoluble solid can be a metal oxide, or can be a metal carbonate. Metal hydroxide are usually alkali. So when they are alkali, we go for a titration. Fill the burette with dilute sulfuric acid. Okay. Here do mention that add few drops of methyl orange in the flask. Okay. Fill the burette with the sulfuric acid. Now add slowly sulfuric acid into aqueous ammonia while swirling the flask to make sure that the complete mixing must occur. Until color changes. Now repeat the process without indicator and add same amount of sulfuric acid from the burette. Okay, is this understandable? Now heat the solution till crystallization.
allow to cool, and then dry the crystals. So see, so it means last time in this question is very easy. Now let's see. But I think it will be not difficult because they have provided you all of the information in this part. Yeah, October number 23 का 4-1. Wash कर. If the precipitates are formed, because these are water insoluble, so you can always wash with the distilled water. But here, when you are get the crystals, these crystals cannot be washed with the distilled water because these are water soluble, so they will drain away, gets dissolved in water and drain away. नहीं, ये वाला हमारे वेरिएंट का नहीं है. हमारे वेरिएंट का भी दिखा देता हूँ. लेट मी शो यू. See, that is just our variants October, November 2024 or 2023. Copper 2 sulfate is a salt used to kill pests on plant leaves. Now see, in the other variant, they have given you the titration. Here they are giving you with the excess solid. The acid with the excess solid, plan an experiment to prepare pure dry crystals of copper 2 sulfate. जोर से बोलो. If the salt is soluble and both the reagents are soluble, then we do the titration. If the salt is insoluble and both the reagents are soluble, then it's precipitation. Common laboratory apparatuses: dilute sulfuric acid, solid copper 2 sulfate. No other chemical has been used. Your plan include the apparatus needed. The method to use. Now it's not titration because see, the other reagent is a solid copper oxide. Yeah, it's more easy. See, mix the solid copper sulfate, and remember in this we always use the solid in excess to make sure all the acid has been used up and turns into the salt. So we'll get the pure salt. Otherwise, if it's not in excess, it has been dissolved, then some of the acid would left. So mix the solid copper sulfate excess in dilute sulfuric acid. Sir, 5 minutes. Warm the container. Yeah. Warm the container. Okay. Yeah, but it's better to write the apparatus because they have asked you to apparatus needed. So in excess dilute sulfuric acid in a beaker. Warm the beaker. Why we warm the beaker? Because the reaction occurs a little faster because copper oxides are the copper and their oxides or the compounds are relatively less reactive. Who is saying precipitation? You are asking. See, the other reagent is a solid. So one reagent is a aqueous and the other reagent is a solid. So it is the another method for a soluble salt. In precipitation, there is, both the reagents are aqueous, like in titration, but the salt form must be insoluble. So you have to remember, if you know the solubilities, then you can able to identify which method can be used.
Okay, warm the beaker until solid stops dissolving, no bubbles, because it's a oxide. So acid and a metal oxide gives you salt and water. So there is a no bubbling. Yeah, if there is a metal carbonate, then we will say that we will continue till the bubbles stop, and then we filter out. So until the solid stop dissolving. Filter the mixture to remove excess solid. Now we got the filtrate, and in that filtrate we have a copper 2 sulfate. So heat the filtrate till crystallization point. Allow it to cool. Then dry the crystals. So I think that designing question is not that difficult. सिर्फ आप लोगों का है कि वो आप लोगों ने थोड़ा सा सोच के रखा हुआ है कि वो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा काम रहेंगे पेपर में तो आई थिंक ये बहुत इजीली हो जाएगा. Yes, you have to mention the crystallization. Okay. So best of luck for the exams. और सॉलिबिलिटी रूल्स लिखवाए हैं. देखें सॉलिड डिसॉल्व किसमें होता है. देखें जो सॉलिड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं उन सॉलिड्स की नॉर्मली दो नेचर्स होती हैं एक्सेप्ट ऑर्गेनिक. या तो वो मेटल ऑक्साइड्स होंगे, मेटल होंगे तो वो एसिड में डिसॉल्व हो जाएंगे, और या वो बेसिक होंगे तो वो, और वो एसिडिक नेचर के होंगे तो वो बेस में डिसॉल्व हो जाएंगे. और अदरवाइज वाटर में कौन डिसॉल्व होता है कौन डिसॉल्व नहीं होता उसका पूरा चार्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के नोट में. सही है. सो मंडे को आप लोगों का पेपर है फिजिक्स का. सही है, ठीक है, चलें. बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज.